chapters, chapter 34, 35, and 36, in which we read Himavat requested Maharishi Vashish to narrate the story of Anaranya. Anaranya was a great, a powerful king who had a beautiful daughter named Padma, uh, whose beauty was comparable to goddess Lakshmi herself. Upon seeing her beauty, actually, there was an old sage called Pipalad who became lustful seeing her, and he asked for her hand to Anaranya. Anaranya was reluctant to do that, but Pripalad, he told him, he threatened him that he's going to destroy the whole kingdom, his all the assets to ashes, if he's not going to listen to him. He had no, Anaranya had no other choice but to marry his daughter to Pipalad. But seeing all that, he was devastated, so he abandoned everything and left to forest for performing penance, and he attained moksha, and he went to Shivaloka. On the other hand, meanwhile, Padma wholeheartedly devoted herself to her husband, seeing that Dharma wanted to test her, and he took guised himself as a wealthy, attractive king and told her to come with him instead and leave her husband away, which agitated Padma to an extent that she cursed him. Listening to what the Dharma was actually afraid, and he revealed his true identity to her. Then seeing Dharma in his true form, Padma told him that the curse she had given him is going to come true, but he would attain his entire divinity, his power back in the Satyug, whereas in different other yugs like Kali Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, he's going to keep on losing his legs, and later half of the Kali Yuga, he's going to lose all his legs. But he would attain, he would become powerful again, his entire divinity back in Satyug. Listening to that, Dharma was actually, he was relieved. He gave her a boon. He made her husband young again, and he gave them the couple boon of 10 sons, which would be greater than the father. There, Vashisht also advised Himavat, after narrating the story, to give his daughter's hand to Lord Shiva, because there was an auspicious time coming for the birth of a good child. Listening to which, Himavat took suggestion from the other mountains, and upon approval he did announce the alliance between Lord Shiva and Parvati. The sages went to Lord Shiva to tell him everything that had happened on the 4th day, and they guided him to go to Himavat's abode and marry Mata Parvati there. Then everyone else went back to their abode, and this is where we read last time. Today we are going to read 2 chapters. They are chapter 37, which is the letter of betrothal dispatch, and chapter 38, that's the description of dais. Chapter 37, 38, English would be read by me, and Hindi reading would be done by Rajanti. Chapter 37. The letter of betrothal is dispatched. The requisites for the celebration are gathered, and the mountain invitees arrive. Narada said, "Dear wise father, when the 7 sages returned, what did Himachala do? Please tell me, O Lord." Brahma said, "O great sage, I shall tell you what Himachala did. When the 7 sages and Arundhati left, bidding farewell to his brothers Meru and other Himachala, the Lord of Mountains rejoiced in the company of his sons, daughter, and wife. Urged by them lovingly, Himachala caused the letter of betrothal to be written by Garga, his priest. He dispatched the letter of betrothal to Shiva along with articles of homage through his kinsmen. Those people arrived at Kailasha and handed over the letter to Shiva after applying the holy mark on his forehead. After being duly honored by the Lord, they returned highly delighted to the penance of the mountain. On seeing those people who had been highly honored by Lord Shiva and who had returned excessively delighted, the mountain rejoiced much. Then he extended his invitation, highly pleasing, to his kinsmen stationed in different places with great delight. Then he began collecting foodstuffs and other requisite articles intended for the performance of the marriage. Mountainous masses of rice, beaten rice, jaggery, sugar candies, and salt were heaped up. He caused huge tanks and receptacles built for milk, ghee, and curds as well,
as well as for fried flour cakes of barley and other grains and ball-like sweets. Big tanks and receptacles were made for the nectar, sugarcane juice, baked cakes, and the sugar candies. Tanks were built for butter, spirituous beverages, sweet juices of various kinds, and rice preparations of various sorts. Different kinds of pickles and side dishes were prepared that might appeal to Shivaganas and the gods. Different kinds of valuable garments purified in fire were kept ready. Gems and jewels of different kinds, gold, silver, and other articles were gathered duly. Auspicious rites were started by the mountain on an auspicious day. The women folk of the mountain performed the purificatory ceremony for Parvati. Women, bedecked in ornaments, performed auspicious rites. The delighted Brahmin women of the city did everything in accordance with the tradition and custom. Great festivities and holy auspicious rites were performed by the delighted Hemavat too. Delighted in every respect and eagerly awaiting the arrival of his kinsmen, he was excited with various emotions. The invitees came there along with their wives, children, and attendants. O celestial sage, listen to a detailed narration of the arrival of those mountains. In order to increase the devotion to Shiva, I shall explain in brief. Mandara, the chief mountain in heaven, came to Himavat in a divine form. He was highly refulgent. He was accompanied by his wife and children. His company shone brilliantly. He had brought with him many gems and jewels. Bringing with him many articles of presentation, the liberal western mountain reached there in a divine form. The eastern mountain came there with brilliant gems and jewels. He looked delighted and extremely brilliant. The highly venerable lord of mountains, Malaya, came there with his followers. He was happy with his excellent followers. The mountain Dardura came along with his wife. He was exquisitely dressed. He was delighted. He had many attendants with him. Oh dear, the delighted mountain Nisatha came along with his attendants. He was very brilliant. The fortunate mountain Gandhamadana came with great pleasure along with his children and womenfolk. Mountains Karavira and Mahindra of great wealth and prosperity also came there. Peryatra came with attendants, children, and womenfolk. He was brilliant and delighted. He had brought many gems and jewels with him. Karunaka, the chief of mountains, came with a large army of attendants. He had articles of presentation with him. He was accompanied by his kinsmen and relatives. Purushottama mountain came with many presentation articles. He was highly honored along with the followers. The mountain Nila, with plenty of wealth, came along with his sons and womenfolk. The mountain Trikuta, Chitrakuta, Venkata, Shirigiri, Gokamukha, and Narada came also. The excellent mountain Vindhya, possessing many riches, came there delightedly along with his wife and sons. The mountain Kalanjara, highly resplendent and extremely delighted, came along with his attendants. The mountain Kailasha, favoring everyone because of brilliant Lord Shiva, came there delighted. All other mountains from several continents, O Brahman, assembled together in the abode of Hemavat. O sage, all these mountains invited by Hemavat came there to attend the marriage of Shiva and Shiv. The brilliant rivers, Sonabhadra and others came delightfully to be present at the marriage of Shiva and Shiv. All the rivers bedecked in ornaments came lovingly in the divine forms at the marriage of Shiva and Shiv. The rivers Godavari, Yamuna, Brahmastri, and Venika came to attend marriage of Shiva and Shiv. With great pleasure, Ganga too, assuming a divine form fully bedecked in ornaments, came to attend the marriage of Shiva and Shiv. The best of rivers, Narmada, daughter of Rudra, came joyfully and quickly to attend the marriage of Shiva and Shiv. The entire city of Hemavat was full of excitement and ardent fervor when the invitees gathered there together. Great festivities went on in the city. Banners, flags, and festoons shone everywhere. The canopies hid the sunlight. Hemavat welcomed them with great delight and reverence. The mountains and the rivers, the gents and the ladies, were duly received. He housed them suitably in separate places. They were gratified with the amenities provided by Hemavat. Chapter 38, Description of the Dais. Brahma said, Then the Lord of Mountains, O excellent age, attended to the decoration of the entire city befitting the great festivities ahead. The roads were watered and swept clean. At every door, stumps of plantain trees and other auspicious symbols were fixed.
The courtyard was embellished with the plantain trees tied with silken cords. There were festoons of mango leaves, festoons with garlands of jasmine flowers shone everywhere. Other articles of auspicious portent were fixed in every quarter. These and other things were carried out by Hemavat for the sake of his daughter. Every activity was surprised by Garga of great ability. Everything auspicious worth mentioning found a place there. He called Vishvakarmana and requested him to erect a large, spacious dais beautiful with side rostrums and altars, etc. The dais, O celestial sage, was 10,000 yojanas wide. It was wonderfully constructed and had all the characteristics feature. All the mobile and immobile objects of the world were presented there with a realistic appearance. Everything was wonderfully portrayed. The mobile objects presented there surpassed the immobile ones, and immobile ones surpassed the mobile ones in excellence. The watery places presented there excelled the solid grounds. Even experts could not distinguish what was water and what was solid ground. There were artificial loins. There were rows of storks. There were artificial peacocks, but very beautiful in appearance. Artificial women were represented as dancing with artificial men casting wistful glances at them and enchanting them. Beautiful representations of gatekeepers with uplifted bows in their hands appeared like real originals. The statue of Mahalakshmi at the main entrance appeared like the goddess just emerged from milk ocean. It was because all the characteristics were complete. Elephants with their mahouts and horses with their riders were so natural that none would say that they were artificial. Chariots were driven by charioteers, other vehicles by other drivers. There were foot soldiers also. All of them were artificial. O sage, Vishvakarma was so delighted that he made all these things to fascinate the visiting dignitaries, the gods and the sages. O sage, the statue of Nandi at the portals of crystalline purity and brilliance was a prototype of the real Nandi. Above that there was celestial chariot Pushpak decorated with sprouts. It shone with gods represented therein. On the left side there were two huge saffron-colored elephants with four tusks and appearing to be of 60 years in age. They shone lustrously. There were two horses too, brilliant like the sun. They were bedecked in divine ornaments and other necessary embellishments. The guardians of the quarters were shown as adorned with great gems. All the gods were portrayed by Vishvakarma realistically. Bhrigu and other sages, secondary gods, Siddhas and others were represented by Vishvakarma. A wonderful image of Vishnu and his attendants Garuda and others were created by him with wonderful features. I too was portrayed as surrounded by my sons, Vedas and Siddhas. O Narada, I was presented as reciting the hymns. An artificial image of Indra seated on Aravata and accompanied by his attendants was made by him looking as beautiful as the full moon. O celestial sage, of what avail is a long drawn description? The gods were drawn by Vishvakarma as desired by Hemavat. The altar was erected by him with wonderful features fascinating the gods and exquisite in form. On being commanded by the Lord of Mountains, the intelligent Vishvakarma created different abodes for the residence of gods and others. Great couches of wonderful brilliance, very cozy and exquisite, were made by Vishvakarma for their sake. For the residence of Brahma, 7 wonderful abodes were created in a trice. They had great brilliance. A brilliant abode of Vishnu called Vaikuntha with wonderful features were created in a trice. Vishwakarma created a wonderfully divine palace for the Lord of gods endowed with all riches. Wonderful mansion for the guardians of the quarters were erected by Vishwakarma. They were beautiful and large. Mansions of various kinds were built by him for other gods too. The highly intelligent Vishwakarma built everything very quickly for the propitiation of Shiva, from whom he had secured great favors. Similarly, he erected Shiva's mansion of various shapes and of great brilliance. Having the symbol of Shiva, it was designated as Shivaloka. It was admired by all the gods. Thus, for propitiating Shiva, wonderful and very brilliant structures were erected by Vishwakarma, making all arrangements in accordance with worldly conventions. Hemavat awaited eagerly for the arrival of Shiva.
Thus, O divine sage, I have narrated the pleasing story of Himawat entirely. What else do you wish to hear? This concludes the English reading. Hindi reading would be done by Rajanti. Jai Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji for giving me another chance to read Shiv Mahapuran. अध्याय 37 और 38। हिमवान का भगवान शिव के पास लग्न पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्रज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्त ऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां आए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के भूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदर स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु जनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उद्याचल, मल्य, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात्र, कौंच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो पर्वत है वह सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ
वहां पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली, पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारें बनवाई और उन्हें उन सब खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वे आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवऋषि वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छाया रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी ये नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सारसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियां थीं जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हूँ। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। मुने प्रसन्नचित वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी आश्चर्य में डालने के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रतन विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था।
जो पल्लवों और श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में 2 कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो चमर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्यान्य उपदेव और उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद, उसी प्रकार पुत्रों और वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देव ऋषि, बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित होकर विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त, महान तथा देवताओं को भी मोहने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिव लोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वह परम उज्ज्वल, महान प्रभापुंज से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार ये सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि, हिमालय का ये सारा आनंदमय वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 37 और 38 समाप्त। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू संगत जी।